Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 12th September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज़ है फानीगिरी बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट से रिलेटेड। फानीगिरी बुद्धिस्ट जो आर्टिफैक्ट्स है उनका डिस्प्ले स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ न्यूयॉर्क स्टेट म्यूजियम में। और ये बेसिकली दिस आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो रिसेंटली एक इम्पोर्टेंस गेन किया है कहीं ना कहीं इस न्यूयॉर्क सिटी में। सो है क्या, थोड़ा समझते हैं इसका फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में। सो द फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू 200 BC एंड 400 BC आर ऑन डिस्प्ले एट द न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। इसके बारे में समझा जाए तो फानीगिरी विच मीन्स हिलॉक ऑफ स्नेकहुड इज ए स्मॉल विलेज लोकेटेड अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद and it is a treasure trove of ancient Buddhist art, and it was discovered in 1942 and it re-emerged into the world spotlight in 2003. फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में अगर जाना जाए तो इट इज़ बेसिकली सबसे पहला इट इज़ ए स्तूपा लाइक आर्किटेक्चर and the discovery of the Fanigiri particularly the Thoranas archway have rewritten the narrative of Buddhism in South India. तो कहते हैं ना कि साउथ इंडिया में बुद्धिज्म का उतना इवोल्यूशन नहीं है, बट दिस फानीगिरी आर्टिफैक्ट शोज दैट यस इट हैज़ बिन ए लार्ज, मतलब आप कह सकते हैं एक रिच हेरिटेज और कल्चर है। दूसरा, presence of sects. These Thoranas are among the earliest found south of Sanchi and provide evidence of both Mahayana and Hinayana school of thought coexisting in Fanigiri. And deifications of Buddha, deification of Buddha, that is Fanigiri reveals a crucial transition in the perceptions of Buddha from a historical and a spiritual figure to a deity, and this transformation is etched in the artifacts discovered here, जहाँ से इसको मालूम चल सकता है। So that is bit important फानीगिरी, और इससे रिलेटेड हो सकता है आपको क्वेश्चंस भी आए, so kindly go through these articles. So that is related to the फानीगिरी artifacts. चलिए अपने अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है, रिसेंटली IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव डेवलप्ड ए हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स एंड दिस नैनो पार्टिकल्स कैन किल कैंसर सेल्स। कैंसर रिसर्च में ये बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट एक डेवलपमेंट ये है कि रिसेंटली दे हैव डेवलप्ड ए नैनो पार्टिकल्स विच इज गोइंग टू किल द कैंसर सेल। क्या है थोड़ा समझते हैं। So these nanoparticles are basically gold and copper sulfide nanoparticles, and these innovative nanoparticles, scientists has engineered hybrid nanoparticles that blend gold and copper sulfide, resulting in multifunctional nanoparticles with promising implications for cancer detection and treatment. जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि nanoparticles एक यूनिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स का फीचर्स कुछ और होगा तो nanoparticles का फीचर पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है। And these nanoparticles have power or capacity to convert light into heat, तो light को heat में convert कर सकता है, and this can help in killing those cancerous cells. Photothermal and oxidative properties. These nanoparticles exhibit photothermal capabilities where they absorb light and convert it into heat, effectively killing cancerous cell. Moreover, they produce singlet oxygen atom which further contribute to the cell toxicity. Next, combining mechanisms. The nanoparticles employ both photothermal and oxidative mechanisms to target and eliminate cancer cell effectively. Next, revolutionizing a cancer diagnosis. Not only this killing of cancer cell, but ये कैंसर के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। कैसे? सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड वेव्स। बियॉन्ड कैंसर ट्रीटमेंट दिस हाइब्रिड नैनोपार्टिकल्स होल्ड पोटेंशियल फॉर कैंसर डायग्नोसिस, and this photoacoustic property enable them to absorb light and generate ultrasound waves. Next, high contrast detections. The ultrasound waves enhance the contrast for detecting cancer cell once the nanoparticles reach them. This method offers superior image resolutions compared to traditional CT and MRI scans. Clarity and oxygen saturation measurement. Scan generates through ultrasound waves boosts greater clarity and the ability to measure oxygen saturations within tumor, enhance cancer detections accuracy. And integration with existing system. The nanoparticles can be seamlessly integrated with the current detections and treatment system. For instance, endoscope used for cancer screening can trigger nanoparticles induce heat generations with focused light. एक तो नेक्स्ट ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर्स, जहाँ पर आप किसी सेल के पास नैनो पार्टिकल्स जाएंगे और लाइट दिया जाएगा तो दिस नैनो पार्टिकल्स विल कन्वर्ट द लाइट इनटू हीट एंड हेंस दे विल डिस्ट्रॉय दोस कैंसरस सेल। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट थोड़ा और समझा जाए तो ओवरकमिंग साइज लिमिटेशंस, साइज एडवांटेज, दिस हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स मेजरिंग लेस देन 8 नैनोमीटर possess a critical advantage in terms of mobility within tissues and their ability to reach tumor and potential safe eliminations due to their diminutive size. Researchers anticipate that these nanoparticles can exit the human body naturally without accumulating. However, extensive safety studies are essential to confirm their suitability of internal use. देखिए, नॉर्मली साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ही निकल जाएगा, accumulation नहीं होगा, but that need to be tested. Successful lab testing in laboratory settings, the researchers conducted successful tests using these nanoparticles on lung and cervical cancer cell lining, demonstrating their potentials. And clinical development, the promising outcome from this study propelled the nanoparticles closer to clinical development. ठीक है, that is the provisions regarding this overcoming size limitations. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. अगला जो अपना न्यूज़ है वो है पिको फ्लेयर जेट्स एंड रिसेंट revolutions from the Solar Orbiter aircraft. A collaborative endeavor between the European Space Agency and NASA has illuminated the pico flare jets erupting from the sun's outer atmosphere. This jet, marked by their supersonic emergence and brief durations of 20 to 100 seconds, have captured the attention of scientists and space enthusiasts. ठीक है, तो ये पिको फ्लेयर जेट्स रिलीज होता है और बहुत कम टाइम के लिए, दैट इज 20 to 100 seconds डस्ट. थोड़ा समझते हैं आखिर ये है क्या. देखिए, पिको फ्लेयर जेट्स ऑब्जर्व एमिट्स emissions from the observed coronal holes are diminutive in scale but pack a potent punch, and this ephemeral existence believes that their significance, as scientists have calculated, they contribute a substantial portion of the solar wind. ठीक है, large amount of solar wind का जो portion है वो पिको फ्लेयर ही होते हैं. And these solar emanations earned their name pico flare jet owing to their energy level which hover around 1 trillionth of the solar flares and millions energy potentials. ठीक है, and solar wind driven by strong gust can not only craft aurora in polar region but also disrupt Earth's magnetic field and jeopardize electronic system on satellites and terrestrial circuits. ठीक है, तो ये एक डैमेज कर सकता है. ठीक, नेक्स्ट थोड़ा समझा जाए तो जेट एट द सन पोल्स, द पोलर ऑर्बिटर by the extreme ultraviolet imager instrument on the solar orbiter spacecraft reveals plasma ejections that permeates coronal holes, and this give rise to various incidents like एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डैमेज किया जा सकता है और दूसरा जो सैटेलाइट की जो फंक्शनिंग होना उसको डिसरप्ट कर सकता है. तो दैट्स वाई हमने आदित्य मिशन भी लॉन्च किया था टू स्टडी अबाउट द सन्स एंड उसके फ्लेयर्स वगैरह, एंड दिस पिको फ्लेयर्स इज अ न्यू इन दैट सेगमेंट. सो दैट इज रिगार्डिंग द पिको फ्लेयर्स. Next, Solar Orbiter aircraft, recently a stellar journey launched in 2022. The Solar Orbiter aircraft embarked on a mission to capture unprecedented image of the sun, propelling closer than any previous spacecraft. आपको याद होगा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था. And instrumentation excellence, equipped with 6 remote sensing instrument and 4 set of in situ instrument, the spacecraft is primed for comprehensive solar explorations. Mission objective: the Solar Orbiter aircraft carries 2 primary objectives. पहला, to scrutinize the sun's 11-year cycle of magnetic activity, ebbs and flow, and to delve into the mysteries of solar coronal, the upper echelon of sun atmosphere. ठीक है, तो उसको समझने के लिए भी ये दिया गया था. That is about Solar Orbiter aircraft. चलिए अपने अगले न्यूज़ में चलते हैं. अगला जो अपना न्यूज़ है वो है विद्या समीक्षा केंद्र. Recently, Vidya Samiksha Kendra is a data repository which will have data from all schemes run by the Ministry of Education. तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई भी स्कीम लॉन्च करता है विद्या से एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी एक पूरी तरह से रिपोजिटरी रहेगा. एंड द कंट्रोल रूम ऑफ दिस केंद्र विल कलेक्ट डाटा टू ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एज वेल एज एनालाइज डाटा कोलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग. ठीक है, तो AI और मशीन लर्निंग का यूज होगा. एंड दिस रिपोजिटरी विल इंक्लूड रेगुलरली अपडेटेड डाटा फ्रॉम PM पोषण, मिड डे मील प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग डाटा, textbook content from digital infrastructure, school dropout and attendance related data, and students learning outcome from the National Achievement Survey and Performance Grading Index, which evaluate the school education system at the state and UT level. This is regarding the Vidya Samiksha Kendra. Next, significance क्या है? The idea of developing Vidya Samiksha Kendra is also to map the school location layer with the population layer to assess the gross assets
access ratio. It can help plan for new school or for industry cluster to understand the skilling requirement of the area and help plan higher educational institutions based on demand and future scenario. So that is regarding the आपका विद्या समीक्षा केंद्र. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. And thanks for watching. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other videos. Take care.